Perfect. So we'll be discussing for today's GK, and let's discuss a bit of about Pakistan in general. पाकिस्तान के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं काफ़ी सारी, लेकिन अब जो है ये वाला जो है मतलब ये एक एक पॉइंट्स में पाकिस्तान की मेन मेन चीज़ें जो हैं वो हमें बताएगा. लाइक पॉपुलेशन इज 2225 मिलियन से अबव है, राइट. उससे अबव है. एग्जैक्ट नंबर जो है हमें कहीं नहीं मिलता. हम यही कह सकते हैं कि ओवर 225 मिलियन पीपल. एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपसे इवन के पेपर में भी नहीं पूछते, वो भी एग्रीगेट फिगर्स ऑप्शंस में दी होती हैं, राइट जी. उसके बाद हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें हमारे हमारे पास जो है इंडिया से बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, ईरान से लगता है, चाइना से लगता है, अरेबियन सी से लगता है. ये हमारी थोड़ी सी ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी मतलब हमारी पर्टिकुलर प्लेसिंग इन द वर्ल्ड मैप, हमारी लोकेशन एग्जैक्ट. अर्थ मतलब जियो मीन्स अर्थ, ग्राफ मीन यानी कि ग्राफ अर्थ पे हमारा जो ग्राफ, ज्योग्राफी, समथिंग लाइक. लैंग्वेज इज उर्दू इज अ नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज an office language, यानी कि it's widely spoken into our business or into our schools. तो उर्दू एंड इंग्लिश. बाकी जो है यहाँ अदर जो है रीजनल लैंग्वेजेस भी फॉलो करती हैं. सिंध की सिंधी एंड पंजाब वी हैव पंजाबी एंड देन वी हैव बलूची एंड देन वी हैव पश्तो एंड देन वी हैव गिलगिती एंड वी हैव बल्ती. ऑलराइट, सो दिस इज द cultural touch, the cultural languages. Religion में we majorly have Muslims, right? Majority of Muslims are there in Pakistan, and we have the other communities as well, which includes Hindus, Christians, Sikhs, all right, and so they are the other communities that live in Pakistan. इकोनॉमी में हमारी जो है थोड़ी सी मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट. लेकिन अगेन जो है ज़्यादातर जो है हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से आता है. बट अगेन वी आर नाउ कन्वर्टिंग टू बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है और सर्विस भी आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग यानी वो इंडस्ट्री जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, और सर्विसेज वो चीज़ें जहाँ पे आपको सर्विस दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जाते हो तो होटल इज अ सर्विस इंडस्ट्री. और एक आप किसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है तो दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट. तो एक फिर होती है मर्चेंडाइजिंग. तो मर्चेंडाइजिंग इज मोर सॉर्ट ऑफ सर्विसिंग. मर्चेंडाइजिंग इज जो है वहां से बनी बनाई चीज वो लेते हैं एंड देन दे सेल इट एज अ होल. वो मतलब मर्चेंडाइजिंग इज मोर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, एंड दिस सर्विस इज मोर सॉर्ट ऑफ खाना पीना रहना, दिस सर्विस, यानी कि होटलिंग, स्टेइंग, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, तो ये सर्विसेज में आता है. गवर्नमेंट स्टाइल जो है हमारा पार्लियामेंट्री फेडरल पार्लियामेंट्री जो हमारा स्टाइल है, जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, जिसे हमने पढ़ा था. एक कैबिनेट होता है और एक नेशनल असेंबली होती है. सो नेशनल असेंबली इज कैरीड आउट बाय प्राइम मिनिस्टर एंड जो और बाकी जो दूसरी वाली होती है दैट इज सेनेट में वी हैव प्रेसिडेंट. यस, तुमने भेज दी पिक. यस, दिस इज द एकेडमी. जस्ट डाउनलोड दैट और इंस्टॉल दैट. That we have culture, we have a rich culture, cultural heritage with influences from South Asia, Central Asia, and Islamic traditions. Islamic को भी follow किया जाता है, and then we have different, you know, uh, different cultures, different regions has different cultures. Like सिंध में आप एक different culture देखोगे, पंजाब has a very different, culture, and then
इस तरह बाकी के मतलब कि हर रीजन का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, हेरिटेज होता है, उसकी सकाफत होती है, उसकी पहचान होती है, उसका एक पर्टिकुलर लिबास होता है, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर उसके खाने होते हैं, उसकी रस्में होती हैं, ट्रेडिशन होती हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड ऑल दैट। हर मतलब के रीजन का अलग अलग। स्पोर्ट्स में हॉकी इज अ नेशनल sport and cricket is the most popular sport which is being followed in Pakistan. History में 1947 we got the British rule, independence from the British rule, India Pakistan आजाद हो जाता है, and that is in 1947. Cities में we have one of the big largest cities Karachi, and then we have Lahore, and then we have Islamabad as the capital of the Pakistan. ठीक है जी। उसके बाद जी देयर आर सम ऑफ द इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब कि इन्होंने इन्वेंट की। ठीक है, लाइक टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑलराइट, एंड देन वी हैव लाइट बल्ब वाज बाय थॉमस एडिसन, एयरप्लेन बाय और एयरप्लेन was thereby from Wright brothers. They both are Wright, और वाइल एंड विल्बर राइट। तो राइट ब्रदर्स थे, इन्होंने पहली मरतबा जो है प्लेन बनाया। प्लेन जो है इन्होंने बनाया एंड दे मेड इट सक्सेसफुल to have the first plane flight in the world, right? So airplane. Then we have radio by Guglielmo Marconi, right? Radio, and then we have penicillin. Penicillin. What is penicillin? Computer was invented by Charles Babbage, right? Automobile, Carl Benz. First automobile was from Carl Benz, and then we have television from Farnsworth, Philo Farnsworth. टेलीविजन, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट। आपने ये सुना होगा कंप्यूटर की, अगर आपने कंप्यूटर की थोड़ी पढ़ी हो तो चार्ल्स बेबेज और जेम्स वॉट का नाम आपने कंप्यूटर की बुक में सुना होगा। देन वी हैव प्रिंटिंग प्रेस, जोहानस गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस इज यू नो प्रिंटिंग द न्यूज़पेपर्स, वो प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रेस क्लब। तो ये सबसे पहले जोहानस गुटेनबर्ग की तरफ से आइडिया आया था। डायनामाइट, डायनामाइट इज dynamite is a diamond, is a form of diamond, dynamite, right? So that was from Alfred Nobel. X-rays from Wilhelm Conrad Röntgen. Telephone switchboard, this is might be Alman Stroweger. And then vaccine, the first vaccine after COVID-19, Edward Jenner. He was the man who came up with this idea. Transistor, transistor was from William Shockley. Transistor is, you know, we used in switchings, right? तो ट्रांजिस्टर जो कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर। डायनामाइट, I guess we have heard dynamite is a bit of right. So we'll be looking a bit of about sport now, a bit of about the general the wordy sport, and a bit of about Pakistan, right? So let's see what are some of the facts about the Pakistani cricket and the general cricket. Football is one of the most popular sport in the world. ठीक है, football is the most followed, and football is also called a soccer, right? Football के दो नाम होते हैं, one is football and the other one is the soccer, right? So it is one of the widely and the most popular
sport in the world. And then we have basketball. This came up from United States, and in that particular region ये बहुत ही famous है. Tennis uh, is again one of the sport, a racket sport जिसमें wooden racket होती है, and there is a uh, uh, even if you are playing individual tennis, you can even also play that, but you can also play it in the teams, right? And then we have golf, is a sport where players hit a ball into a hole using clubs. Again, different, uh, you know, this sport has different rules to play, of course. तो जब हम उस स्पोर्ट में जाएंगे तो विल बी गेटिंग मोर सॉर्ट ऑफ रूल्स ऑफ, राइट. इस तरह और भी जो है हॉकी होती है, राइट. एंड हॉकी इज आवर नेशनल स्पोर्ट अगेन. सो एंड देन वी हैव अ बिट ऑफ अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट. इसमें इसमें जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दैट इज at least you must know when did Pakistan won the World Cup, all right. एक ये आता है, and then when did Pakistan won the T20 World Cup. तो ये वाला. तो Pakistan won the ICC Champions Trophy in 2004 and 17. 2004 and 17 में they won the ICC Champions Trophy, and then they won the T20 World Cup in 2009, and then they won the World Cup in 1992, which is the biggest one, under the Imran Khan. 1992. Wasim Akram is one of the best fastest bowler that we have ever produced in Pakistan, right? And Inzamam ul Haq is considered to be the most run scorer in both Test and ODI. Can anyone please come up with the abbreviations of ODI? What does it stand for? ODI, or even ICC. What is the abbreviation of ICC? What is the abbreviation of T20? Do you guys have any idea? Or because these abbreviations could also be the part. Right? Pakistan has a bit of a very good in the Test cricket. They had been in very good form, but अभी इनकी टेस्ट क्रिकेट जो है इतनी मजे की नहीं है. But they had been very good in past in Test cricket. But now they have been very good in ODIs, right? And Pakistan national cricket team is known as Men in Green and plays their home matches in various cities across the country. So one is the home matches and the other is the away matches. So home matches वो होते हैं क्योंकि बाहर की टीम अगर आपके मुल्क में आके खेल रही है तो दैट आर द होम मैचेस. और अगर आप जा रहे हैं किसी और के पास खेलने तो जो है ना वो आपके अवे मैचेस हो जाएंगे. तो जिस टीम की तरफ आप खेलने जाएंगे वो उनके होम मैचेस हो जाएंगे, आपके अवे मैचेस हो जाएंगे. तो होम मैचेस एंड अवे मैचेस, राइट. And then we have also now, which is very much common 2008 के बाद, we have the franchise cricket. One is the international cricket, one is the franchise cricket, right? So to just commercialize the cricket, to just make it out of borders. तो हमने जो है different tournaments लेके आए हैं. Which point? Home and away wala? Are you talking about Yes, home and? sir. Yes. So home and away. Home away are those के let's say दो टीमें हैं पाकिस्तान और इंडिया. अगर इंडिया जो है पाकिस्तान में खेलने आएगी तो हम अपनी बात करेंगे तो हमारे होम मैचेस होंगे क्योंकि वो हमारे घर में खेलने आई है, हमारे होम में खेलने आई है, हमारी कंट्री में खेलने आई है, राइट. और अगर हम जो है इंडिया खेलने जाएंगे तो हमारे वो अवे मैचेस हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट द होम एंड अवे मींस. होम मतलब अपने घर में खेलना, अवे मतलब उनके घर में जाके खेलना. तो अगर हम इंडिया में जाके खेलेंगे तो हमारे अवे मैचेस हो जाएंगे, तो अगर वो हमारी मुल्क में आएंगे खेलेंगे तो हमारे होम मैचेस हो जाएंगे. सही.
वेरी गुड. ओके, देन आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट. तो इंटरनेशनल में तो यू हैव इंटरनेशनल. यस. Yes, absolutely. You play at other countries. They are all away matches. Like you can, if you're playing in India, that is your away match. If you're playing in England, that is your away match. If you're playing in Australia, that is your away match. Right? किसी भी कंट्री में आप बाहर जाके खेल रहे हो, they all are considered to be your away matches. और कोई भी टीम आपके पास आ रही है, तो it would be your home match. बस ये तक है. And then, uh, अच्छा, then there is also a concept of neutral venue. What is the neutral thing? One is neutral thing is कि ना आपका होम हो ना उनका होम हो. लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेंगे, तो दैट विल बी अ न्यूट्रल वेन्यू. तो ये ना उनका घर है ना हमारा घर है. ठीक है. तो जो है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना बड़े मसले होते हैं. तो पाकिस्तान की टीम उधर जाना नहीं चाहती, इंडिया की टीम इधर नहीं आना चाहती. तो उनको खत्म करने के लिए कि भाई हम न्यूट्रल वेन्यू करेंगे, कि भाई हम आप दोनों का मैच इंग्लैंड में कर देंगे, लेट्स से. ठीक है. तो उससे क्या होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल वेन्यू. तो वन इज द होम वेन्यू, वन इज द अवे वेन्यू, वन इज द न्यूट्रल वेन्यू. तो न्यूट्रल वेन्यू इज किसी का भी घर नहीं, ना किसी का घर ना किसी का अवे. दिस इज न्यूट्रल, यानी 0-0. राइट. देन वी हैड, आई वाज टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनल में अगर आप मुल्क की तरफ से खेल रहे हो, दैट विल बी इंटरनेशनल. पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे आर द इंटरनेशनल्स. राइट. एंड बाकी अगर जो क्लब क्रिकेट होती है या दूसरी, जैसे हमारे पास पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग. इंडिया के पास है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग. राइट. देन ऑस्ट्रेलिया के पास है बिग बैश लीग, बीबीएल, बिग बैश लीग. एंड देन बांग्लादेश के पास है बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग. राइट. इस तरह सीपीएल है, विच इज कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो कि वेस्ट इंडीज में होती है. एंड देन वी हैव वाइटैलिटी ब्लास्ट, जो कि इंग्लैंड में होती है. सो दीज आर द डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसमें खिलाड़ियों को मिक्स करके खिलाया जाता है, ताकि टू गेन द अवेयरनेस, टू गेन व्हाट अवेयरनेस, एंड जस्ट टू कमर्शलाइज एक्चुअली. और उसमें फिर आपका आईसीसी नहीं होता. करंट कैप्टन इज बाबर आजम. राइट. द ग्रेट बाबर आजम. एंड द करंट वाइस कैप्टन इज शादाब खान. ऑलराइट. एंड ये जो चीज है, दिस इज द करंट. तो इसलिए ये करंट अफेयर में आता है. ठीक है. हो सकता है आपका जब पेपर बन रहा हो उस टाइम कोई और कप्तान हो. राइट. तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ विजिलेंसी ऑन दिस, कि यू नीड टू सी कि आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है. तो दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से कि यू शुड वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द टाइम्स न्यूज हेडलाइंस, कि आज की दुनिया में आजकल क्या क्या हो रहा है. And then we have chemistry. Chemistry में at least you must know the first 10 elements, name of the first 10 elements, उनके atomic number और उनके atomic mass. Right? Chemistry. Science is also a part of general knowledge. Right? तो इसलिए मैंने साइंस का पार्ट भी डाला है, because this is also includes in that particular thing. तो इसमें ये जब आपको मैं प्रोवाइड करूँगा this particular PDF. So you must go through these first 10 elements of the periodic table with their atomic number and their atomic mass, which I have also given in this list. At least 10 तक आपको याद होने चाहिए. There is a possibility कि आ जाएं, तो you must not regret कि हमने पढ़ा नहीं है and all that. और बाकी ये जो एटॉमिक मास है, इसकी जरूरी नहीं है कि यू यू रिमेंबर 1.008. नो. बस वन आप करें, इसको 1 करें, इसको 4 करें, इसको इसका ऑप्शन तो या आपको 6, 7, 8, 9. तो द करेक्ट वुड बी 7, बिकॉज 6.9 इज क्लोजर टू 7. तो इस तरह थोड़ा सा जो है ना आपको इसको रीड करना पड़ेगा. जैसा ये 15.999, इसका ऑप्शन 16 आएगा. So atomic mass has to be 16.
अनटिल ऑलवेज ये एग्जैक्ट नंबर, जब एग्जैक्ट नंबर नहीं आते या तो फिर 14 आता है या 15 आता है या 16 आता है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 16. 15.99 is more closest to 60 rather than 15. Then we have a bit of a physics, and then we have a bit of a human body, which is biology, right? So ये चीजें भी आपके पास आती हैं. Physics is the study of matter and energy, right? The laws of physics govern the behavior of everything in the universe, from the smallest particle to the largest structure, right? Yeah, this is the definition. Key concepts in physics include energy, force, motion, waves, Albert Einstein's theory of relativity, right? So आपका ये आ सकता है, who gave the theory of relativity? So that is the Albert Einstein's, all right? या ये आ सकता है, Albert Einstein's theory of relativity revolutionized what? So that would be space and time. It focuses on space and time. Then we have quantum mechanics, describes the behavior of particles at the atomic and subatomic level. Quantum mechanics. Then we have laws of thermodynamics, which is thermodynamics means um, you know, the transfer of heat energy, and it's all about the study of heat, actually, thermodynamics, right? And then we have electromagnetism, right? It's the study of interaction between electrically charged particles and magnetic fields. Electromagnetism. Yes. Thermal is equals to heat. Yes, very good. And then we have a bit of about body. Human body is made up of approximately 60% of water. Average adult human body contains enough bones to make up an entire human skeleton. A human brain is the most complex organ in the body, containing millions of neurons and trillions of synapses. Synapses are like, बिल्कुल बारीक बारीक सी lines, nerves and tissues and all. The human body has more than 600 muscles that allow us to move, breathe, perform various functions. The human heart beat around 1 lakh times per day, pumping blood through approximately 60,000 miles of blood vessels. Right? तो ये इतना मतलब चलता है. Human body is capable of producing over 1 lakh different proteins, which are essential for the proper functioning of our cells. The human body is capable of healing itself through process such as inflammation. So this inflammation is a process where जब आपको चोट लग जाती है, so it does heal it by itself. तो थोड़ी अरसे के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है. Right? So this process is called inflammation, blood clotting, and through processes such as inflammation, blood clotting, and cell regeneration. ठीक है. तो कई बार कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसमें जो है क्या होता है कि कोई एक उनके कान नहीं होते, लेकिन वो जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो सही हो जाते हैं, या उनका ऑपरेशन वगैरह होता है, एंड देन ऑल दैट. तो सेल रीजनरेशन, दिस टॉपिक इज सेल रीजनरेशन. द ह्यूमन बॉडी हैज 5 सेंसेस का, there are 5 senses in the human body: sense of sight, hearing, touch, taste, smell, which allow us to perceive and interact with the world around us.